Hello, friends. Shazli here from Top Rankers, and I welcome you all for the session on Ace Your English for CLAT strategically. So, by the name itself, you must have gotten the idea, but probably you don't have any idea that what all I'm going to address in the session. So, don't leave the session in between. Do attend the entire session. Probably I'm actually hitting on those points which are considered to be very painful areas for you, or that probably will be considered as an Achilles heel for you. Now, what do you mean by Achilles heel? Something or a kind of mistake or a fault which might or which may lead to failure. All right. So probably you people are still struggling or juggling in order to achieve your desired score. So I will be addressing those challenges which students are experiencing every now and then, and I'm here to guide you with all those strategies so that you actually be at utmost ease and achieve your targeted score. So shall I begin with the session? Before I begin with the actual session where I'll be sharing my strategies with you, I just would like to highlight certain challenges which students are experiencing while preparing for their CLAT. So these are the real challenges. First challenge is that students are not au fait with the content given in the passage. So many students probably are not so acquainted with the content. Some of the students probably don't read much related to philosophy or literature or economics or science and technology. And if they are getting passages of those genres, so that is always a challenge for the students because they don't understand passage at all. So that is the first struggle, to get a little acquainted with the topic, to understand, to fathom what is written in a particular passage and then attempt the question. तो आपकी अगर आधी struggle है वहां पे, like उसको अगर हम देखें बच्चा, what the struggles related to passage, तो दो ही struggles होती हैं. One is 50% weightage is given to your understanding about the topic, and say 50% weightage is given to the approaches to the question, how to approach a question and how to attempt the question correctly. All right, so these are the two challenges which are related to their reading. So the first one is obviously related to the content. Students are not so comfortable with the content, not au fait or familiar with the content. Second is not able to learn vocabulary effectively. अगर आप आज भी traditional method of learning vocabulary use कर रहे हैं, suppose if you're learning vocabulary via just by framing some sentences or just by remembering the meaning of the words or writing down the sentences or writing down the meaning of the words and revising on and off, all right, that's not going to work at all right. इसके लिए बच्चा, क्योंकि आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है, आपको कम टाइम में ज्यादा vocabulary करना है, so obviously I believe that if you start learning vocabulary with certain techniques like mnemonic is one of the techniques, then we have got words clustering. I think these two techniques may work wonder for you at this moment of time when you don't have much time. सो निमोनिक टेक्निक का एक एग्जांपल देना चाहूंगी स्टूडेंट्स. एसिनाइन, एसिनाइन को अगर आप ब्रेक करें तो एसी को 80 कर सकते हैं, 9. अगर आपके 80, दैट मींस 80 में से 9 मार्क्स आते हैं, दैट मींस यू आर स्टूपिड. द मीनिंग ऑफ एसिनाइन इज stupid. All right, so for that technique we have got a dictionary, that is mnemonicdictionary.com. Another technique can be words clustering, where you learn words in groups. All right, like if I make a certain group, so हाईएस्ट पीक को अपन बोल सकते हैं बच्चा समिट, क्रेस्ट, जेनिथ, पिनाकल, मेरिडियन, एपोजी. ऑलराइट, दीज आर द डिफरेंट सिनोनिम्स फॉर this like highest peak of something. Peak can itself be synonym. So सारे synonyms या antonyms को हमने एक जगह cluster बनाया, and then we are learning words, so probably that helps students out. इस technique का सबसे बड़ा benefit ये है बच्चा, that you learn words in a short span of time. All right, and then that too more words in short span of time. Suppose अगर मुझे mnemonic technique में 1.5 hour में 60 words लग रहा है याद करने के लिए, so probably for word clustering I may learn say somewhere around 150 words in 1.5 hour class. All right, so that is the beauty of the strategy. Now third problem or the challenge can be anxiety. अभी काफी सारे स्टूडेंट्स आर इन पैनिक मोड. काफी मतलब उनको लगता है कि दे आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर प्रिपरेशन, और दे आर नॉट स्कोरिंग ग्रेट इन देयर like mocks, and some of the students they are becoming a little negative
all right, they have started doubting themselves. So obviously you shouldn't do it at this moment of time. You should rely on yourself, you should do justice with your preparation. एंजाइटी को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चा, कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, ऑल राइट, या आपको लगता है कि you're नॉट सो कंफर्टेबल, तो टेक इट एज अ चैलेंज कि इस पर्टिकुलर वीक में आई एम गोइंग टू टारगेट दैट, सो दैट यू गेन सम कॉन्फिडेंस. एंड दूसरा तरीका ये है बच्चा, लिसन टू सम पॉजिटिव songs. You can always search or browse the websites you are planning to go, like NLU. All right, आपकी जो भी desired colleges हैं, आप उनकी websites को visit करेंगे तो it brings a lot of positivity among the students. तो anxiety को deal करना आपको आना चाहिए. You should be calm, composed while giving the examination. All right, आप अगर एक belief के साथ examination hall में जाएंगे कि this is something which is not the end, probably I'm starting anew. All right, so if you have got, or I will definitely have multiple opportunities in my life, I just need to think of all those opportunities to explore. All right, अगर आप इस approach के साथ examination की preparation करेंगे तो आपको anxiety नहीं होगी. Now, next challenge is confusion between the two options. So normally it happens with the students कि दो options में they get stuck और उसके बाद they end up choosing the wrong answer choice. So उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है process of elimination, जिस पे आप ज्यादा ध्यान दो कि, and for that you should read the question first. Again, you should rather reread the question. आप लोग एक गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन पे की जगह यू सिंपली गो टू द ऑप्शंस, फिर वो चारों के चारों ऑप्शंस मल्टीपल टाइम रीड कर रहा है, या यू गो बैक टू द पैसेज और उसको रीड करना चालू करते हैं. प्लीज डू रीड द क्वेश्चन अगेन. ऑलराइट, क्वेश्चन में ही आपको हिंट दी रहती है कि व्हाट एक्चुअली शुड बी योर लुकअप. All right, and उन lookups को आप अपने options में देख सकते हैं, identify them and choose the correct answer. And on what ground you are eliminating the other answer choices has to be cleared. जैसे misleading language can be one thing, then contradictory information, then we have got say the irrelevant answer choice. One point being discussed in detail, but that's just the supporting point. And then we have the options like assumption wala question तो नहीं है, तो assumption वाला point है. Extrapolation is not allowed in CLAT. All right, तो ये सारे आपको तरीके पता होना चाहिए that on these ground I'm going to eliminate the answers. Now, some of the students they tend to leave two passages. बच्चा that's quite dangerous कि अगर आप दो ही passage साथ छोड़े, एक आध passage छूटता है तो भी चलता है. वैसे वैसे तो I believe कि आपको passage छोड़ते ही चाहिए. Instead, what you are supposed to do is you should leave the question rather than leaving the entire passage. हो सकता है कि उसपे कुछ factual question बहुत ही easy थे जो आपने passage को पढ़ा नहीं, question को पढ़ा नहीं. कई बार ऐसा होता है we don't have understanding towards a particular genre or the topic, so we tend to leave such passages. But हो सकता है कि उसमें कुछ direct questions भी हो, so even if you don't have basic understanding about the topic, then still you can attempt factual questions correctly. So do not leave the two passages completely. Take more time in starting, which eventually affects the overall performance. All right, so आपको आप ज्यादातर क्या करते हैं, यू टेक अ लॉट मोर टाइम इन द स्टार्टिंग कि मैम वो फ्लो बनाने में 10-15 मिनट चले जाते हैं और उसके बाद हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं. तो उस फ्लो बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज you can simply you should read the article before you enter the examination hall. तो आप एक आध आर्टिकल को चूज करें, एक लिंक सेव कर लें कि दिस इज समथिंग व्हिच आई विल बी रीडिंग बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट यू एक्चुअली हैव दैट मोमेंटो. ऑलराइट, कि आप क्लास में जा रहे हैं एंड देन क्लास में आपने जाते से ही पढ़ा, मतलब फ्लो बन गया था बाहर पढ़ के, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. सो दीज आर द रियल टाइम चैलेंजेस विद द स्टूडेंट्स. अब देखिए बच्चा, क्लैट 2020 मैंने अभी आपको जो सबसे पहली प्रॉब्लम बताई थी, दैट वाज अबाउट कि आपके पास कंटेंट नहीं, मतलब यू आर नॉट सो फैमिलियर विद द कंटेंट गिवन इन द पैसेजेस. तो आइडेंटिफाई दोज वेबसाइट्स जो कि जिससे कि क्लैट पैसेजेस उठाता है. आई हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू. जैसे क्लैट 2020 में आपका एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से था, एक आपका एक्सट्रैक्ट आया था शॉर्ट स्टोरी से, ऑलराइट, द कैट by Men E. Wilkins, Freeman. And then एक शॉर्ट स्टोरी से आया था केट चॉपिंस्की. देन एक और आपका आया था बच्चा द केस फॉर द डिफेंस, ये भी एक एक्सट्रैक्ट था, और एडिटोरियल द हिंदू का आया था. सो वी कीप सजेस्टिंग आवर स्टूडेंट्स कि आपको द हिंदू से एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए या टाइम्स ऑफ इंडिया से एडिटोरियल पढ़ना चाहिए. एंड आई कीप सजेस्टिंग माई स्टूडेंट्स
कि आपको जितना हो सके एडिटोरियल्स भी पढ़ना चाहिए. नाउ लिटरेचर के लिए स्टूडेंट्स, नाउ यू डोंट हैव टाइम कि आप ओवरऑल लाइक मल्टीपल नॉवेल्स पढ़े, बिकॉज यू हार्डली हैव अ फ्यू डेज, लाइक समवेयर अराउंड आपके 80 टू 70 to 80 डेज ही बचे होंगे अब. ऑल राइट, सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो सो दैट यू डेवलप इमेजिनरी स्किल्स. और अगर आप वो इमेजिनरी स्किल्स को डेवलप करते हैं एंड यू यूज दोज स्किल्स while reading those extracts from short story, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो लिटरेचर वाला पैसेज होता है तो उसमें यू कैन बी श्योर कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट जा सकते हैं. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्लैट 2021 की वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, britannica.com, द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड अगेन उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज से एक एक्सट्रैक्ट उठाया था, एडिटोरियल द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम. तो ये वो वेबसाइट्स है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स है जो क्लैट कंसोर्टियम ने जहां से पैसेजेस उठा के क्वेश्चंस फ्रेम करे थे इन क्लैट 2021. Similarly, आप देख सकते हो CLAT 2022. You can pause the video and write down those sources because I believe कि अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने से पहले आप वो सारी चीजें एक्सप्लोर करें जो कि क्लैट कंसोर्टियम रेफर करता है एवरी नाउ एंड देन. ऑल राइट, तो आप देखिए क्लैट 2022 में अ लॉन्ग वे होम सरू ब्राइली की एक स्टोरी थी. देखिए नेक्स्ट आपका एक पैसेज था जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से उठाया गया था. ऑल राइट, देन आपका एक था एक वेबसाइट मैंने मेंशन करी है, एओन मेंशन करा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड रिलीजन मेंशन करी है बच्चा, एंड देन encyclopedia.com. ये सारे वो सोर्सेज हैं जहां से आपके पैसेजेस आए थे इन क्लैट 2022. सो काइंडली रेफर दीज वेबसाइट्स, start reading articles almost every day. You should read, say, at least 5 articles in a day at this moment of time. Now CLAT 2023 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो उसमें these are the sources which were used in CLAT 2023. आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट था स्टूडेंट आपका द प्रोविंशियल रीडर बाय सुमाना रॉय के लिए. देन आपका एक द डिग का एक एक्सट्रैक्ट लिया गया था. अनदर एक्सट्रैक्ट वाज टेकन फ्रॉम एट द मर्सी ऑफ वाटर माफिया बाय अमन सेठी फॉरेन पॉलिसी. Then there was another extract, How Young Indians Are Changing the World by Snigdha Poonam, and another extract from Haroon and the Sea of Stories by Salman Rushdie. All right. अब बच्चा ये जो मैं एक्सट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, आप देखो क्लैट 2023 में मोस्ट ऑफ द टाइम दे रेफर टू इंडियन ऑथर्स, लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के में ही पूरे पैसेजेस थे. सो ट्राई टू बी अ लिटिल मोर एक्वेंटेड विद इंडियन ऑथर्स, इंडियन टेक्स्ट, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री. एक किलाडी के ऊपर पैसेज था तो वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पैसेज था. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग कि वोकैबुलरी में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने चैलेंजेस में लिखा था, पहला चैलेंज के लिए आई हैव जस्ट शेयर्ड डिफरेंट सोर्सेज सो दैट यू एंड दैट टू ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि क्लैट कंसोर्टियम ने रेफर करे थे. ऑल राइट, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1. Another challenge was not able to learn vocabulary effectively, जिसके लिए मैंने आपको निमोनिक टेक्निक बताई थी एंड वर्ड क्लस्टरिंग टेक्निक बताई है. एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सोर्सेज भी लिखे हैं, mnemonicdictionary.com, एंड वर्ड्स क्लस्टरिंग के लिए आपका thesaurus.com कैन रियली हेल्प यू आउट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. वर्ड्स क्लस्टर क्या होता है, जहाँ पे हम क्लस्टर्स बनाते हैं. आई जस्ट शेयर वन मोर क्लस्टर, हेट का क्लस्टर. सो हेट के लिए यू हैव गॉट वर्ड लाइक despise, then you have word abhor, then loathe, then abominate, then detest. So these are different synonyms for the word hate. All right. So you can get all those words on thesaurus.com. Another problem is anxiety. Anxiety के लिए बच्चा you should be motivated. तो आप कुछ motivational songs सुन सकते हैं, motivational stories पढ़ सकते हैं. You can talk to your elders, you can talk to your mentors, you can talk to anybody who is surrounded, matlab any friend ki bhai I'm not comfortable, I don't know whether I'll be able to clear my exam and all right, try to talk, try to be a little more extrovert and try to be a little more talkative. That ways interact with the people, express your feelings. That is one thing. Second is
ट्राई टू फोकस ऑन गुड फूड, कि आप जो भी खाना खाएं आपको अच्छा लगे, एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू टेक हेल्दी मील्स, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आपको मतलब एंजाइटी में भी आप कुछ ऐसे फूड ले सकते हैं। आप सोए ज्यादा, कम से कम बच्चा आई बिलीव कि आपको 7 to 8 आवर्स इन अ डे सोना चाहिए। ऑल राइट, तो उससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका, and at the same time you'll be able to learn vocabulary effectively. At the same time you'll be able to concentrate on articles reading if you're sleeping properly. So try to sleep say for 7 to 8 hours. Apart from that, students, for dealing with anxiety, कि आप हर हफ्ते अपना एक वीक एरिया, वीक पॉइंट को टारगेट रखो, कि प्रोबेबली माय एक्लीज हील इज vocabulary, so I'll work on my vocabulary, or I'll just improve on my RC tones or figures of speech. So हर हफ्ते का एक टारगेट रखिए, try to achieve that target throughout the week, and you feel confident then कि no, I'm doing justice with my own preparation, I'm able to understand something. All right, so and these are the ways of dealing with the anxieties. All right, now next is confusion between the two options. That happens only when you don't have prior knowledge about the topics, or probably you are not able to identify the hinting words given in the questions or in the options. So इस problem को deal करने के लिए I have come up with some suggestions. One is you should identify the question type और उसकी specific lookups की question में पूछा क्या गया है. Second is reread the googly questions. Googly questions कैसे होते हैं students, कि which is not false according, अब वहां पे not true तो सुना है हमने, not false में अगर आ जाता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है चूज करना. एट टाइम्स वी कीप कमिटिंग मिस्टेक, ये तो पैसेज के हिसाब से सही था, ऑलराइट इसमें नॉट फॉल्स लिखा है, या ये पैसेज के हिसाब से गलत था, ऑलराइट, और इस नॉट फॉल्स में कंफ्यूजन हो रहा है. ऐसे ही एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, कि एक ऑप्शन में सपोज लिखा हुआ है द गवर्नमेंट mandated समथिंग, और जबकि पैसेज में था द गवर्नमेंट रिकमेंडेड समथिंग, तो ऑब्वियसली आपके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा मैंडेटेड वाला ऑप्शन, क्योंकि वहां पे रिकमेंडेशन और मैंडेशन तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. मैंडेटेड इज समथिंग टू मेक कंपलसरी, ऑलराइट, तो दैट वाज जस्ट अ रिकमेंडेशन. सो दीज आर द गूगली क्वेश्चंस वेयर वी दे हैव कॉमन ट्रैप्स. अनदर एग्जांपल, जैसे ऑप्शन में इन्होंने कुछ पैसेज में दिया था समथिंग टेस्टेड, और पैसेज के अंदर गए तो वहां पे लिखा था रेयरली टेस्टेड, तो वो स्टूडेंट ने रेयरली वर्ड को ही मिस कर दिया था while doing that question, and he ended up marking the wrong answer choice. So these are the googly questions which you should be taking into consideration. इसमें common traps होते हैं, identify those common traps, try to get acquainted with that specific question type, and it actually makes the difference, क्योंकि आपका स्कोर में आप जंप देख सकते हो, आप अपने स्कोर में देख सकते हो कि नो यू आर डूइंग जस्टिस विद योर स्कोर्स. हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन वो छोटी छोटे से एरर्स की वजह से ही गलत गए थे आपके. सो इफ यू आर स्कोरिंग दैट, सो दैट्स obviously eventually is contributing to your overall score. Now next is look out for hinting words given in the question. So whenever you have confusion between the two options, reread the question rather than reading the options, or reading the like what do we call it, reading the text itself. काफी student text दोबारा पढ़ने लगते. Do you really have time to read the text for multiple time? Of course not. So that time what you're supposed to do is you should read the question, and question के lookups ये question का criteria है. So for that I'm eliminating this answer and I'm choosing that specific answer choice. Now avoid common traps जो मैंने आपको googly questions में explain करा है. Now next, you tend to leave 2 to 3 passages, जो कि obviously बहुत बड़ी mistake है. You may expect say somewhere around 4 to 6 passages in your CLAT. तो अगर देखा जाए तो probably you'll be getting say 5 passages. 5 में से अगर 2 छोड़ दिए, 3 करे आपने, मतलब आपने सीधे सीधे suppose 7 to 8 questions छोड़ दिए आपने. ऑलराइट, प्रोबेबली 10 क्वेश्चंस छोड़ दिया आपने, बाकी के क्वेश्चंस करे, तो अगर आपके अटेम्प्ट्स ही कम होंगे और उसमें भी कुछ गलत चले गए तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं आएगा क्लैट में. ऑलराइट, पहली बात इंग्लिश सेक्शन का स्कोर अच्छा नहीं आएगा, एंड देन इट डेफिनेटली विल अफेक्ट योर ओवरऑल स्कोर एज वेल. सो प्लीज डू नॉट लीव सो मेनी पैसेजेस. In fact, what you're supposed to do, you should leave the questions. कि I am attempting all the passages, and but I was not confused. I was confused with these questions. So I'm leaving say 4 questions, attempting say 20 questions where I have got surety about the correct answers. All right, so that actually helps you out. कुछ ऐसे passages होते हैं, like which
makes you a little more uncomfortable and you tend to skip that passage. So suppose if you're not comfortable, say with history or economics or any genre, you end up leaving that entire passage. But probably there are say 2 to 3 questions in that passage where the questions are very simple. You just need to refer to the passage, try to identify the given information given in the passage and attempt the questions accordingly. So at time, even if you don't understand the passage, but if there are some factual questions, so you actually have got high probability of attempting those questions correctly. All right, so do not leave the passage, you should leave the questions. Now leaving a passage should be the last resort. Leaving a passage, मैंने आ देखिए कैपिटल में लिखा है जानबूझ के. ऑल राइट, बिकॉज एक आध पैसेज आप छोड़ सकते हो, आप 2 3 पैसेज तो वैसे भी मतलब यू शुड नॉट बी लीविंग 2 to 3 passages. At times we may end up leaving one passage, but that should be the last resort when you don't have choice. All right, probably you have spent most of the time in CR or कुछ और sections में आपने ज्यादा time spend कर दिया. You don't have much time कि आप सारे questions के साथ English में justice कर पाए. तो आप एक बार जल्दी से passage को देखा करो जो आपको लगता है कि this genre is something where I'm not so comfortable. Leave that passage, attempt the remaining passages. But that should be that you should do as a last resort. All right. Now, next is take more time in starting. Uh, that is another challenge that student take more time in the starting, which eventually affects the overall performance because you end up losing say 15 to 20 minutes. ऐसे ही आपने time waste कर दिया मोमेंटो बनाने में, थोड़ा सा flow में जाने के लिए. तो that happens with almost all the students. तो उसके लिए I think I have already suggested you that you should read an interesting article just before the examination. So that actually helps students out कि एग्जाम हॉल से पहले बस जाने से पहले एक फ्लो में था, तो जाके आप इजीली कंसंट्रेट कर सकते हो. आपने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जो आपको इंटरेस्टिंग लगा था, आपने उसकी लिंक कहीं ना कहीं शेयर कर ली या आपने कहीं सेव कर ली लिंक को, और उसके बाद जब एग्जाम में आधा घंटा है तो आपने उस आर्टिकल को पढ़ना चालू करा एंड यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपका वो मोमेंटो बना होता है एंड यू आर ऑलरेडी इनटू रीडिंग. ऑलराइट, तो आप जब वहां जाके पैसेजेस को पढ़ना चालू करते हैं तो यू एक्चुअली डू जस्टिस विद इट. कभी भी बच्चा जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाए या 2 3 पैसेज के बाद आपको लगता है यू नीड अ ब्रेक, उस ब्रेक में आप अपने ओएमआर शीट को फिल कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग द एंटायर ओएमआर शीट इन द स्टार्टिंग और एट लास्ट, you can do it. All right, so that gives you a sigh of relief and you do justice with the remaining questions. So that's all, students. I hope you must have understood all the strategies, and these strategies are very, very effective. Try to incorporate in the upcoming mocks and whatever the material you are referring and you're solving. If you incorporate all those strategies, so I can see that probably you'll get a huge jump in your actual score. So if you're scoring, say, 11 to 15 in your English section, so you end up scoring, say, 17 to 18 by using these strategies. And try to read as much as possible at this moment of time, at least 5 articles per day. And I have already shared those websites which you should be referring, because these are the websites which CLAT Consortium referred for making your question paper. So that's all for today, students. Thank you so much. Bye bye. Take care and all the best.